Hello friends, good afternoon to you all. I'm here back with the third and the final part of Deep Water Class 12th, book name as Flamingo. Okay, Deep Water first two parts I've already uploaded. I hope you've gone through them peacefully and you understood everything. And this is the last and the final part, uh, Deep Water, an excerpt written by William Douglas. This excerpt or this piece is taken from his autobiographical account and autobiography. What is the name of that autobiography? You remember? That is Of Man and Mountains. Of Man and Mountains is the name of the autobiography, and Deep Water is taken from that. And I think I have explained you a lot regarding all this in the previous uh, videos, and if you have any doubt you can go through this video, then you can consult me on WhatsApp also. तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है. So finally we have seen in the previous video how that particular nightmarish experience uh, at the pool really shaped his personality or shaped his future, isn't it? When he was 3 years old, in a way, he was the symptoms of this particular hydrophobia started growing, and finally, when he was 11 years old, that means after that particular incident which happened at the pool, when that boy, 18-year-old boy, ducked him into water, the hydrophobia became permanent in his heart, doesn't it? That means started suffering from hydrophobia completely. He was unable to do anything. Okay, so consequences of hydrophobia for Douglas, we have read in the previous, we have learned in the previous video how he had a miraculous escape from the pool. He was at the brink of death, but because of the will of God, हम कहते हैं ना, जाको राके सैया मार सके ना कोई. So he was saved by a particular person, doesn't it? And he had a miraculous escape. But in a way उसके बाद उसका डर बहुत बढ़ गया था. Hydrophobia increased in intensity. Okay. सॉरी. तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोफोबिया फॉर डगलस. अब उसके, जैसे मैंने कहा ना, कोई चीज़ होती है, कोई डर होता है, एक तो उसका कॉज होता है, फिर उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेज, रेमिफिकेशन, नतीजे क्या होते हैं. तो हियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोफोबिया फॉर डगलस. इसके बाद क्या हुआ? जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चैन से जी पाया. लेट अस सी. रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स समथिंग विच कम्स अगेन एंड अगेन. रिकरिंग, repeating again and again. So recurring terror haunted him. Haunted, isn't it? If something is haunting you, that means it is coming in your mind again and again, and you are not able to get rid of that. So recurring terror haunted him. Which terror? The terror of water. The terror associated with that particular incidents which happened in the pool when he was ducked or plunged into water. It ruined his adventurous streak because he stayed at that particular place, which was known for all the lush green landscape, rivers, lakes, isn't it? Mountains. So that adventurous streak which he was having in his heart, it was natural. But unfortunately, he was not able to go for adventures or expeditions because of this particular fear. So it ruined his adventurous streak. Icy horror would grab his heart. Icy horror. Here, horror को personification किया गया, isn't it? Icy horror would grab his heart. Okay, whenever he would try to uh, go into water, or whenever he thought of jumping into water or wading in water, walking in the water, isn't it? The horror, the terror would grab his heart. Okay, and icy horror, isn't it? Very cold horror. That means very, very cruel, isn't it? With horror or terror without any understanding would grab his heart, and this continued for years. This handicap, ये जो एक हैंडीकैप था कि मैं पानी में नहीं जा सकता, he was very able person, is a talented person, but because of this psychological fear, he was not able to do anything. So he was unable to do fishing on main uh, fishing. Okay, main, Maine, main is a lake. Okay, he was unable to do fishing on main fishing. Okay, uh, unable to do fishing on main lake. इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी. main lake, Maine, main is a lake. So he was not able to do fishing. Now this main lake
is famous for salmon. Salmon. Salmon इसका pronunciation नहीं है, इसका pronunciation salmon. Salmon is a type of very nutritious fish. Okay, it's a delight for the non-vegetarian people. Salmon. Okay, so unable to do fishing on mean, unable to do trout fishing. Trout is another type of fish here. Okay, he was not able to do trout fishing. तो ये दो तरह के fish बहुत fond of, was very fond of, but he was not able to do ट्राउट फिशिंग डे शूट्स. देखो इसका प्रोनाउंसिएशन डैश चूटस, ऐसा कुछ मत बोलना उसको. डे डे शूट्स, डे शूट्स, एस भी नहीं लगेगा, सॉरी. डे शूट, डे शूट, एस इज साइलेंट. दोनों तरफ जो एस बिगनिंग में आ रहा है और लास्ट में आ रहा है, एस साइलेंट है. सो डे शूट एंड मेटलियस, ये दोनों रिवर्स के नाम है. डे शूट इज अ रिवर एंड Metalius is also a river, and both these rivers are the tributaries of another river. What is the name of that river? Orgon. Orgon is the name of the main river, and these two, Deschutes and Metalius, they are the tributaries of Orgon. So a lot of GK knowledge also you are gaining here, enhancing your GK knowledge. समझ में आया? ये सारी के सारी फिशिंग जो एक्सपीडिशन थी इसके एक तरह से स्पॉइल हो चुकी थी. कोई नदी में नहीं जा सकता था, कोई लेक में नहीं जा सकता था. ही कैन नॉट डू फिशिंग, नथिंग एट ऑल. सो इट डिस्ट्रॉयड हिज फिशिंग एक्टिविटीज एंड कैनोइंग एक्टिविटीज. CANOEING. कैनोइंग का मतलब होता है बोटिंग. कैनो, कैनो का मतलब होता है बोट. So isn't it boat, if you are using boat, or if you are doing boating, it also comes under expedition or adventurous sport. All this adventurous sports he was not able to do because of this handicap, that is psychological fear. ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया डेशूट क्या है, मेटलियस क्या है, ऑर्गन क्या है, सैमन क्या है, ट्राउट क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया. ट्राउट, salmon, they are two types of fish. Okay, or deschute, Metolius, they are the tributaries, सहायक नदियां जिसको कहते हैं, of organ. ठीक है, I hope you are understanding. So he is not able to do all this. Everything is spoiled over here. मैंने एक अपनों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में गोट रॉक्स. ओके, थोड़ा डिस्कशन में बता देता हूँ व्हाट इज गोट रॉक्स. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट गोट रॉक्स, यू कैन गो टू द, यू कैन सर्च ऑन गूगल. बट गोट रॉक्स इज अ टाइप ऑफ, जिसके आसपास ये सारी नदियाँ, नीचे आपको लेक भी मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, इट्स लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट. सो गोट रॉक्स इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ स्ट्रेटोवॉल्केनो. अब स्ट्रेटोवॉल्केनो, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, लेयर्ड वॉल्केनो. So it's a type of a, you can, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, it's a type of mountain made up of volcanic rock. समझ में आया? तो बहुत खूबसूरत दिखता है वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ माउंटेन. इट इज एक्चुअली स्ट्रेटोवॉल्केनो वेयर इन सदर्न वॉशिंगटन, अमेरिका. ठीक है, और इसकी खास वॉल्केनिक माउंटेन की खास बात क्या है? इट इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स विथ लेयर्स ऑफ लावा एंड वॉल्केनिक ऐश. अगर आप इसको देखोगे तो इसमें परतें जमी हुई, एक परत, one layer of lava and then another layer of volcanic ash alternately. Okay, so this goat rock is very very famous over there. ठीक है, इसके नीचे आपको नदी मिल जाएंगी, इसके नीचे आपको लेक मिल जाएगा. बट ही वॉज अनेबल टू गो देयर बिकॉज ऑफ दिस हैंडीकैप, बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल फियर. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, तो गोट रॉक्स के बारे में अगर डिटेल पूरा पिक्चर आप देख रहे हो, वाइट वाइट, बहुत खूबसूरत नज़ारा है. ठीक है ना. एफर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे. देखो, एक उसकी पॉजिटिव चीज ये थी, ही व्हाट यू कैन से, ही नेवर सकम्ब टू हिज फियर, isn't it? He never allowed his fear to dominate him completely, isn't it? He was able to think rationally. He made a decision. Okay, I am suffering, I am hydrophobic, isn't it? But I have to do something. I have to get rid of this hydrophobia. I have to neutralize this hydrophobia. It is very very important for me. Okay, so that's why it is said that even if you are going through pain, isn't it, if you have the gut, if you have the guts, if you are the daredevilry, if you have the never to say die attitude, you can do anything. Even the impossible you are able to do sorry, nicely. Okay, because efforts build character. एक अंग्रेजी में कहावत है कि
You suffer not because something happens to you. Okay, you suffer because you are not able to respond positively to what happens to you. So what happens to you is not important. How you respond to what happens to you is more important. Isn't it? Nightmare या कुछ problems तो सबके साथ हो सकती हैं, isn't it? There are not things are not in your hand, but how you respond to that crisis, that is more important. And he responded positively. So what he did, उसने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, isn't it? So he was very resourceful also. You have to think positively and you have to make plans. What he did, he hired an instructor, practice 5 days a week. उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया, and 5 days a week what happened, he practiced swimming with the help of this instructor. Okay, and वो instructor ने एक methodology use करी, isn't it? What was that methodology? He, that means the swimming instructor, tied a belt around his waist. एक बेल्ट उसने उसके वेस्ट पे बांधा, किसने? स्विमर ने. एंड दैट बेल्ट इट वाज अटैच्ड टू द रोप. और उस बेल्ट से क्या अटैच था? रोप विच वेंट थ्रू अ पुली. और ये रोप किससे कनेक्टेड थी? एक पुली से. PULLE गोल गोल आती है ना. एंड दैट पुली रैन ऑन ओवरहेड केबल. ये पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करो, इजंट इट? क्या? फिर से मैं बता रहा हूँ. ही टाइड अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट. द वेस्ट इट वॉज tied to a rope, and the rope it was attached. Got it? So belt it was tied to the rope, and that particular rope went through a pulley. Got it? The rope went through a pulley which ran on an overhead cable. ये पूरा एक सिस्टम था. बेल्ट उसके कमर में बांध दिया. कमर को किससे जोड़ दिया? रस्सी से. और रस्सी किस पे चल रही थी? एक पुली पे. ओके, और वो पुली कनेक्टेड थी किससे? एक केबल से. Got it? And one end of the rope it was held. एक रोप का हिस्सा तो किससे बंधा था? उसके वेस्ट. किसके वेस्ट से? दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट मीन्स डगलस. और दूसरा रस्सी का सिरा किसने पकड़ रखा था? दिस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. ठीक है. और उसने एक पूरा अरेंजमेंट कर रखा था कि रस्सी जो है पुली से जाएगी, वो केबल से कनेक्टेड थी, तो रस्सी से उसने पकड़ रखा था. नाउ द एंड ऑफ द रोप इट वॉज हेल्ड बाय इंस्ट्रक्टर हु मेड हिम स्विम विथ सेफ्टी. सेफ लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना. विथ कंप्लीट सेफ्टी, पूरी सेफ्टी के साथ. कि मान लीजिए कुछ अगर मिसहैप हो जाता, कभी वो डूबने लगे, तो वो रस्सी को खींच दे वहीं पे. वुड पुल that particular rope so that again the man Douglas would come to the surface. ठीक है. तो इस तरह से जब भी उसको लगता था कि नहीं अब इसको पानी के अंदर जाना है, ऐसा नहीं, तो रोप को थोड़ा रिलीज कर देता था. जैसे रोप को रिलीज करता था, पुली के सहारे वो रस्सी धीरे धीरे करके क्या वापस से उसको लेके अंदर चली जाती थी. फिर उसको लगता था नहीं वो डर लग रहा था, तो रस्सी को खींच लेता था. ठीक है. सो द एंड ऑफ द रोप हेल्ड बाय इंस्ट्रक्टर हु मेड हिम स्विम विथ सेफ्टी. Practiced for week and this continued. This was not a small, because डर जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, when the fear reach to your subconscious mind, it is difficult to get rid of. Difficult है, not impossible. तो यहाँ पर you have to practice a lot. He practiced for weeks. Whenever the instructor relaxed his hold on the rope, Douglas went underwater and was terrified. Legs would freeze. और कभी कभी क्या करता था उसको अच्छी तरह सिखाने के लिए, द इंस्ट्रक्टर वुड रिलीज द रोप. थोड़ा सा ढीला कर देता था रोप को. तो जैसे वो ढीला करता था, बंदा ये जो था डगलस वुड गो इनटू द वाटर. एंड व्हेनेवर ही वुड गो इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंड? अगेन ही वुड legs would paralyze, become rigid, and that terror would return, and his legs would freeze. But then after 3 months, tension, fear began to slack. कम होता गया. Slack means to lessen, to reduce. And this happened only after 3 months. Why? Because he was practicing. ऐसा नहीं कि आज करा कल छोड़ दिया. Continuous for 5 days a week he practiced. I hope this you have understood. इसका क्वेश्चन बनता है एक लंबा कि what was the system which was used by the swimming instructor. तो इसको याद रखना. बेल्ट उसके वेस्ट पे बांधा. बेल्ट को किससे कनेक्ट किया? रस्सी से. रस्सी को किससे कनेक्ट किया? पुली. रस्सी कनेक्टेड थी एक पुल्ली से. Got it? And that pulley or that particular rope, it ran on an overhead cable. और एक छोर था जो रस्सी का किसने पकड़ रखा था? स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. And I hope you are able to get what I am saying. Okay, got it?
नाउ व्हाट हैपन, स्लो एंड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप मेहनत करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंटली नहीं आएगा, स्लो एंड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर एंड हिज पर्सनालिटी स्टार्टेड चेंजिंग। व्हाट हैपन, ही लर्न हाउ टू पुट फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, हाउ टू रेज नोज एंड इनहेल। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग। क्या, ही लर्न हाउ टू पुट फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, पानी मुंह अंदर करना है पानी के और किस तरह से सांस छोड़ना है, एंड हाउ टू रेज नोज एंड इनहेल, नाक को बाहर निकालना है, सांस लेना है, फिर वापस पानी के अंदर जाना, सांस छोड़ना। अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। लर्न हाउ टू किक लेग्स, और फिर सांस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड देन हाउ यू हैव टू किक योर legs, how you have to thrash your legs and hands continuously, ठीक है। so learn how to kick legs, ये पहले नहीं कर पाता था, why? Because of the psychological fear, the legs would become rigid, but now because of the swimming instructor he was able to kick legs peacefully. So slowly and gradually legs listened to his command. Earlier the legs were not listening to him, but now slowly and gradually, because he in a way uh, got rid of, slowly and gradually he was getting rid of the fear, and that's why now the legs were listening to his command. Whose command? Douglas command. पीस बाय पीस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम कहते हैं ना कि एकदम से कुछ चीज आप नहीं सीख सकते। सो इंस्ट्रक्टर टॉट हिम इन पार्ट्स, इंस्ट्रक्टर टॉट हिम इन पीसेस, वन पीस, आज एक चीज सिखा दी, आज जैसे उसने सिखाया हाउ टू एक्सहेल, नेक्स्ट डे ही वुड टीच हिम हाउ टू इनहेल, देन थर्ड डे ही वुड टीच how to lie flat on the ground, the next day he would teach how to kick through legs. तो इस तरह से pieces, अलग अलग pieces उसने बताए, and then all the pieces, it was by mistake it is written over here prices, not prices, it is pieces, all the pieces were joined to form integrated whole। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे pieces को उसने join किया, अल्टीमेटली एक स्विमर बन के तैयार हो गया। कौन, किसमें? डगलस के। जब सारे के सारे उसने स्विमिंग मेथड्स भी सीख लिए, अलग अलग स्विमिंग मेथड भी होते हैं, क्राउल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, number of everything he learned, then all these parts were joined to form an integrated whole, and once the integrated whole is there, the swimmer was ready, ठीक है। by April instructor's job was over, देखो इसमें मैंने लिखा नहीं, but in the month of October he hired that particular instructor। 6 महीने पूरे लगे उसको सीखने में और इस डर को खत्म करने के। By April, instructor's job was over. Douglas' job not yet over. लेकिन Douglas, he was very, what do you say, broad-minded person, and got it? तो उसको लगा कि अभी तो ये, he realized one particular thing, that since just because sorry, instructor is here, so that's why I'm able to, maybe I'm able to swim properly because of the instructor. Now the thing is that, is it possible for me to get rid of my fear when I am alone? This is the question. This was the question he wanted to answer. If I am alone, whether I'll be able to get rid of this fear or not. Is it possible for me to get rid of this particular fear when I am all alone in the pool or in the river or in the lake? तो इसका आंसर वो तलाशना चाहता था, and wanted to make sure if he would be in panic when all alone, क्या ये डर रहेगा जब वो बिल्कुल अकेला होगा, क्योंकि उसके सामने, लोगों के सामने तो उसने सीख लिया, इंस्ट्रक्टर था इसलिए बहुत कुछ सीख लिया, सो ही वांटेड टू मेक इट श्योर। और ये देखिए एक पिक्चर मैंने डाला है, पुली केबल सिस्टम, इसमें आप देख सकते हो रस्सी भी है, केबल भी है, पुली भी है, isn't it? पुली केबल सिस्टम, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आप देख सकते हो जो दो आर स्विमिंग एक्सपर्ट, दे नो हाउ इट वर्क्स, ओके। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। नाउ चैलेंज द डेविल ऑफ फियर, फाइनली व्हाट हैपेंड, उसका डर क्या होता है, एक चीज डर के बारे में है कि अगर आपने उसको डर पे काबू पा भी लिया, फिर एवरी नाउ एंड देन द फियर वुड ट्राई टू हॉन्ट यू, रोज नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा आपको डराने की कोशिश करेगा, doesn't it? But then you have to be very very strong, and this is what Douglas did. This is what Douglas did at that particular time. Tried to swim all alone. पुल पे जब वो स्विमर चला गया, then he tried to swim all alone. Terror in small amount would return. Residual terror would return. Terror in small amount would fear. लेकिन वो बहुत बड़ा जो रूप होता था, दैत्याकार रूप, वो अब नहीं आ रहा। The monstrous fear, it has gone. But now the terror coming in very small quantity, ठीक है।
He would challenge his fear by confronting it and covering the length of the pool. जब भी वो residual fear, मामूली सा fear आता था, तो what he would do, he would stand face to face, doesn't it? He would confront, उसको challenge करता था वो. He would confront that particular fear. He would challenge that fear. Okay, uh, you want to what we say, you want to instead of boosting my morale, you want to put my morale down, isn't it? You want to frighten me? Okay, come, frighten me, isn't it? I am not at all afraid of you. I am not at all terrified by you. He would challenge that particular fear, isn't it? He will show daredevilry, isn't it? And he will stand in front of that particular fear, confront that particular fear, and challenge that fear, looking directly into the eyes of the fear. यहाँ पे मैं metaphor use कर रहा हूँ क्योंकि fear जो है ये कोई आप देख तो सकते ही नहीं हो, isn't it? But I am using this particular personification that he would stare into the eyes of the devil of fear, and challenge him that you cannot uh, uh, you cannot you cannot hijack my confidence. Okay, you cannot hijack my morale, isn't it? Now my morale is boosted and nobody can take my morale from me. If you are a devil, I possess daredevilry. Okay, so he would cover the length of the pool and the fear would vanish. Then he went to all these water bodies, went to Lake Wentworth, एक वेंटवर्थ करके लेके वहां गया, एंड डाइव्ड, उसके अंदर डाइव किया उसने, isn't it? फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टिग्स आइलैंड, एक आइलैंड को मतलब मालूम होगा आपको, आइलैंड पर्टिकुलर लैंड एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम all around, land area which is totally covered by water, that is the island. I hope understood all, huh? So he he jumped into Lake Wentworth from कहाँ, from where, Triggs Island. Triggs Island से इसने jump करा और तैरते तैरते कहाँ पहुंच गया, another island. Which island? Stamp Act Island, isn't it? तो Triggs Island से कूदा लेक वेंटवर्थ में, और कहाँ पहुंचा, स्टैम्प एक्ट आइलैंड. हाउ? बाय स्विमिंग. हाउ मच? 2 माइल. शायद दोनों आइलैंड्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 माइल है, 2 माइल्स. ओके, सो ही रीच्ड देयर. गॉट इट? Got it? The old sensation would return, but he would laugh at the terror. The terror would disappear. And in the middle of the water, जब वो एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जा रहा था, तो old sensation, which particular sensation of fear would return, the terror would return, but he would laugh at that particular fear, isn't it? He would challenge that particular fear. Got it? So terror would realize that now it is difficult for me to terrorize this particular person, and therefore the terror would disappear. ठीक है? His adventure continued to be 100% free of the terror of hydrophobia. अभी भी श्योर नहीं था, उसको लगा मुझे 100% इस डर को का निवारण करना है, isn't it? Got it? So he continued his adventure. और देखो इसमें एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी सीख ये है कि nobody can help you regarding this, isn't it? You have to help yourself. This is something very very important. Swimming instructor अपना काम करके चला गया, but he was the one who was helping himself. This is something very very important. Okay, no other person can teach. और एक और चीज, very important lesson we have to learn, isn't it? Many times what happen, we play the victim card, we play the blame game. अरे मेरी हालत किसकी ऐसी क्यों हो गई? Because of that particular person. वो उसने मुझे ना पानी में धक्का दे दिया था ना, curse upon him. इसकी वजह से ब्लेम गेम खेलते हैं हम लोग, है ना, उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई. नो, यू हैव समथिंग हैपन, ओके, बट नाउ व्हाट? You have to take the bold decision to change yourself, isn't it? You cannot, the past will always come to roast you, isn't it? Past will come to haunt you, but you have to live in the present, and you have to change yourself to build a glorious future, and that's what he did. That यहाँ पे victim card नहीं खेला कि मेरी हालत ऐसी हो गई तो इसलिए मैं ऐसा हो गया. No. So he went to Titans, another river, reached Conrad Meadows. टाइटन में जंप लगाई उसने, ठीक है, बोट से गया शायद वो, फिर थोड़ा तैरा भी, और सीधे कहाँ पहुंच गया, कॉनरेड मीडोज. एक ये मीडोज का मतलब था पर्टिकुलर एरिया, लैंड एरिया कवर्ड विथ
बिग ग्रासेस, बहुत बड़ी बड़ी घासें होती है उस मैदानी इलाके को क्या कहते हैं, मीडो। तो वहां पर पहुंच गया वो। कवर्ड द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, CREE के, क्रीक का मतलब होता है वेरी स्मॉल रिवर, बहुत छोटी नदी को, स्ट्रीम ऑफ वाटर को क्रीक कहते हैं। ओके, तो वहां से कॉनरेड मीडो से वो चला और कहां पहुंच गया, कॉनरेड क्रीक ट्रेल। अब ट्रेल का मतलब होता है पाथ, कभी कभी क्या होता है नदी सूख भी जाती है तो एक पाथ छोड़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो टाइटन्स पे जंप करी, कहाँ पे पहुंचा, कॉनरेड मीडो से। देन फिर वहां से वो कहाँ गया, कॉनरेड क्रीक, वो पाथ जो छोटी सी नदी का पाथ था वो उसने मे बी बोट से कवर किया। एंड रीच्ड मीड ग्लेशियर। अब एक और चीज पहुंच गया, तो कितना सोचिए आप कितनी बेहतरीन जगह रहता था कि सारा का सारा ये नज़ारे उसको देखने को मिलते थे, isn't it? So and reached Mead, MEAD, Mead pronunciation, a Mead glacier, and you know, I hope because you might have learned geography also, doesn't it? You might have learned geography in the previous classes, and you know very well what is glacier, isn't it? What is glacier, by the way? How can you define glacier? Glacier is something associated with ice or snow, slowly moving mass of ice formed by the accumulation of snow on mountains. ये definition. A slowly moving mass of ice formed by the accumulation of snow on mountains. और आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसके जैसे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बहुत नुकसान होने वाला, ठीक है। So, got it? Then again dived into the lake and reached the other shore and back. ठीक है, तो वो then again dived into the lake, फिर वो वापस से वार्म लेक में गया। वार्म लेक में उसने एक पूरा कवर किया डिस्टेंस लेंथ, फिर वापस से रिटर्न आया तेजी से। गेंड स्किल लाइक डॉग डॉग कॉर्प्रोन। डॉग कॉर्प्रोन उस ज़माने में एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर था, जिसको कहते थे स्विमर पावर एक्सीलेंस। उसकी स्विमिंग की स्किल बहुत बेहतरीन मानी जाती थी। सो इन अ वे व्हाट हैपेंड, दिस मैन इमिटेटेड डॉग कॉर्प्रोन इन स्विमिंग। काफ़ी उसने स्किल्स उसके जैसी गेन कर ली थी। वो भी बहुत तेज़ी से लेक में कूदता था। ही वुड कवर द लेंथ, isn't it? And then return back. ये सब करता था वो, isn't it? Shouted with ecstasy and Gilbert Peak. Gilbert is the mountain peak. Okay? Mountain, वो mountain था, उसका peak का नाम Gilbert है। He shouted with ecstasy. Ecstasy means joy. What? Shouted that I, जैसे कि एक, जब आपको मालूम है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला कौन था, आर्किमिडीज है ना, जब उसने वो एक प्रिंसिपल खोज लिया था, ही शाउटेड लाइक यूरेका यूरेका, मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया। तो इन अ वे ही आल्सो शाउटेड विद एक्सटेसी एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द एको, जोर से वो चिल्लाया इन अ वे, यूरेका, आई हैव गेन्ड इट, मैंने पा लिया, आई हैव कॉन्कर्ड इट। एंड अल्टीमेटली हाइड्रोफोबिया वॉज कॉन्कर्ड, पूरी तरह उसका हाइड्रोफोबिया चला गया था। सो ग्रेट लेसन वी हैव लर्न ओवर हियर, ठीक है। और एक चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है, जिसको आप कभी बुक में दे रखा है कि कभी MCQ में आ जाए, जिसके बारे में हम मेंशन किया गया है। डिफरेंट स्विमिंग स्टाइल्स जहाँ पे दे रखी हैं, क्रॉल स्ट्रोक के बारे में दे रखा है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, इसके बारे में सारी जानकारी आप नेट से ले लेना। यहाँ पे क्रॉल स्ट्रोक के बारे में बता देता हूँ मैं, लिखा हुआ यहाँ पे, अ पर्सन, हाउ इट इज़ डन, अ पर्सन लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फेस सबमर्ज, उसका चेहरा जो है आधा पानी में डूबा रहता है, और जो बॉडी होती है कहाँ पे होती है, सरफेस पे। ही लाई और फ्लैट ऑन द वाटर एंड देन ही स्ट्राइक वाटर विथ आर्म्स अल्टरनेटली। एक साथ तो आप अल्टरनेटली यू टू स्ट्राइक और थ्रैश water through your arms, and legs also you have to move simultaneously up and down. कैसे एक साथ नहीं, alternately. If you are doing this, you are doing crawl stroke, isn't it? A person lie flat on the water, face submerged, strike water with arms alternately and legs moving up and down alternately. एक साथ करना है, ओके। और लेग्स पूरे नहीं उठाना है आपको, सिर्फ नीज से उठाना है। और अदर मेथड्स आर ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। और ये पिक्चर भी मैंने डाला किस तरह से ये होता है, एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे जाता है जब आप व्हेन यू थ्रैश वाटर। सो अब लास्ट में समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मैसेज ही वांटेड टू डिलीवर थ्रू दिस एक्सर्प्ट, थ्रू दिस पर्टिकुलर पीस, profound impact of the experience. Profound means very very deep. उसकी पूरी जिंदगी बनी इस एक्सपीरियंस से, जब वो 11 साल का था। एक बहुत नामी जूरिस्ट बने वो, वकील बने वो,
व्हाट वी से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के लीगल एडवाइजर, बहुत बड़ी कोवेटेड पोस्ट थी, ठीक है, और शान से लंबी पारी इन्होंने जी, ठीक है। ये सार है, दिस इज द यू कैन से जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस। क्या? इस एक्सपीरियंस जो था, कुछ कहते हैं ना कि कभी कभी जब तक आप तपते नहीं हो तो आपके सोना नहीं बन पाता, तपते हो तभी निखार आता सोने में, और अंडर प्रेशर ओनली द डायमंड्स आर मेड। डायमंड का जो अगर आप देखोगे, डायमंड किस चीज का बना है बताओ? डायमंड बना है कार्बन का। और कोल किस चीज का बना है? कोल भी कार्बन ही होता है, लेकिन फर्क, ग्रेफाइट भी कार्बन ही होता है, isn't it? बट कोयले की क्या कीमत है? और वही कार्बन अगर डायमंड है तो डायमंड की कीमत कितनी बढ़ जाती है, isn't it? Why? Diamond, coal you can find at the surface, not very deep, but diamond you have to find deeper, you have to dig deeper, then only you will find diamond, and lot of pressure is there on the diamond, then it becomes a diamond. जब तक आपकी जिंदगी में प्रेशर नहीं आएगा आप डायमंड नहीं बन सकते, ठीक है। तो दोज हु हैव गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्क, स्टार्क मतलब कंप्लीट टेरर, एंड कॉन्कर्ड इट, कैन अप्रिशिएट लाइफ। लाइफ हम लोग को ऐसे ही मिल के जी रहे हैं, बहुत से लोग जीते रहते हैं ना, जिंदा लाश बने हुए जीते हैं बहुत से। सम पीपल आर लाइक डेड पीपल वॉकिंग। आपको लाइफ का मजा ही नहीं आता है ना, कहीं पड़े हैं तो पड़े हैं, कहीं चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जिंदगी दूभर हो गई है, समझे? वो क्या कह रहा है? Those who have gone through the experience of terror and finally conquered it, they love the life to the fullest. They appreciate life to the fullest. अगर आपने मौत का मजा चखा, एक तरह से मौत से आमना सामना हुआ है और उसके मुंह से, चंगुल से बच के नहीं, फिर आपका डर ही खत्म हो गया ना, फिर लाइफ को आप शान से जीते हो। पहला सबक। दूसरा सबक क्या है उसका? देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग मौत से घबराते, मौत में डर नहीं है, मौत में क्या है? शांति है, पीस है। लेकिन मौत से एसोसिएटेड जो फियर है, उस फियर में टेरर है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जब वो डेथ का हुआ बन जाता है, जब डेथ की फियर की बात आती है, तो व्हेन पीपल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द फियर ऑफ द डेथ, दे आर टेरिफाइड। In reality, death is something which is peace. There is terror only in the fear of death. तो अगर आप वो फियर अपनी जिंदगी से हटा दो डेथ का, तो आपकी जिंदगी शानदार रहेगी। लेकिन अगर आप वो फियर ऑफ डेथ इज देयर इन योर लाइफ, देन यू विल बी ऑलवेज टेरिफाइड, यू विल बी इन द ग्रिप ऑफ टेरर। इन डेथ देयर इज पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर। डरना ही है तो डर से डरो, isn't it? और मैंने जैसे पहले कहा था फर्स्ट वीडियो में, द फियर इज an acronym for false evidences appearing real. 90% डर तो साइकोलॉजिकल होता है, जो आपके साथ गुजरता ही नहीं, बस डरते रहते हो आप। So when you have experienced, the last बहुत important, when you have experienced the sensation of dying and the terror that fear of death can produce, very important, आपने जब sensation, death का sensation महसूस किया है अपने आप को, and जो डेथ का डर है, वो जो टेरर को प्रोड्यूस करता है, उससे आप रूबरू हुए हों, then the will to live grow in intensity. So when you experience the sensation of death, sensation of dying, and you have gone through the terror that fear of death can produce, the will to live grow in intensity. The will to live, in a way your life would blossom. आपकी लाइफ खिल जाएगी, क्योंकि अब आपको किसी चीज का डर नहीं है। You'll appreciate life to the fullest. You'll thank God to the fullest. Okay? Again, when you experience the sensation of death and the terror that is associated with fear of death, ये fear आप निकाल दोगे तो terror भी अपने आप चला जाएगा, सिर्फ death बचेगा। फिर death तो क्या है? peace है। So as a result, the will to live grow in intent. तो आपको fear को, got it or not? तो अगर आपको terror को घटाना है तो fear को घटाओ, fear को हटाओ, terror हट जाएगा, और isn't it? आपकी life जो है blossom हो जाएगी, isn't it? And you'll really you will be able to transform your life. You will your metamorphosis will be there. अगर आप caterpillar हो तो एक butterfly बन जाओगे, आपके wings लग जाएंगे, ठीक है? I hope you have understood this particular third part. Here we come to the end of the chapter. Please subscribe to the channel, and I feel that students are not paying attention. I came to know they are not watching the videos. Please watch the video, and you are most welcome if you have any doubts regarding English and
economics, that particular part which I'm taking. Thank you very much. Stay safe, stay happy, isn't it? Thank you very much. God bless you.